हेलो माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो मैंने स्पेशल ओटीईटी परीक्षा देवाक जाउछंती 2025 मसिया अर्थात 2025 मसिया कहले आमर एई मास 27 तारिख रे परीक्षा हेबा जाउछि विभिन्न केन्द्र रे। तो ठीक अछि, ता पूर्वरु जो 75,403 जन जो शिक्षक आमर परीक्षा दउछंती सेमानक भितरु जो माने पेपर 1 दउछंती ताले याको देखि नियंतु ओटीईटी 2024 रो इंग्लिश रे कोन सब प्रश्न सब आसीथिला एवं एई भली प्रश्न मध्य परीक्षा रे आसीबो। तो इंग्रजी रो जो 30 नंबर आमर पड़िबो से 30 नंबर आमर 10 नंबर हो आमर पेडागोजी एवं आउ 10 नंबर हो आमर कंटेंट आ 20 नंबर हो आमर कंटेंट। तो एई भली भाबरे 30 नंबर। तेणु पूर्व वर्ष कौन पड़ा से अनुसार आम निजक प्रिपेयर करनेबा। ताल ठीक अच्छे, वीडियो को देखा पूर्व जो चैनल को नुआ सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ठीक अच्छे। आरंभ करवा इंग्लिश। तेणु देखी जे आमर 1 रु 30 नंबर पर्यंत चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी प्रश्न गला। तापर 31 नंबर रु 60 नंबर पर्यंत आमर ओडिया बा M.I.L रो क्वेश्चन गला एवं जोड़ा कि 61 रु आमर 90 पर्यंत ये हूँ आमर इंग्लिश अच्छी। ताल ठीक अच्छे, आम देखी ना 30 प्रश्न कौन कौन सब पड़ा। नंबर 61, द मेन बम्ड इनटू द प्रिटी यंग लेडी नॉट डैश एक्सीडेंट बट डैश पर्पज। द प्रिपोजिशन टू बी यूज्ड इन द अबव सेंटेंस रेस्पेक्टिवली आर। जो को प्रिपोजिशन लगे बाय विथ लगे ना ऑन बाय लगे ना बाय ऑन लगे ना इन ऑन लगे। ताले कोडा हबो ट्रू जेठी लगे बाय on। देखो, the man bumped into the pretty young lady not by accident, एटा बाय लगिला but on purpose। ठीक अछि। नेक्स्ट आमे जिबा नंबर 62, which of the following is grammatically acceptable? Which of the following is grammatically acceptable? The commandos entered the enemy territory after midnight stealthily. The commandos entered the enemy territory stealthily after midnight. The commandos entered stealthily the enemy territory after midnight. The commandos entered after midnight stealthily the enemy territory। ताले यार सठिक उत्तर रहइबो कोडा एठी रहइबो बीटा रहइबो। The commandos entered the enemy territory stealthily after midnight। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 63, which of the following is suitable for conducting formative assessment in scholastic domain? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ओरल क्वेश्चन। देखो ये हम ये ही तो सठिक उत्तर आसीगला। Which of the following is suitable for conducting formative assessment in scholastic domain? तेणु फॉर्मेटिव असेसमेंट रे आमे कोन सादो ओरल क्वेश्चन हमर रहइबो। ठीक है। एवं तापर थिला कन्वर्सेशन स्किल, तापर प्रोजेक्ट ये तो हबो नाही। नेक्स्ट नंबर 64, व्हाट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन आइडेंटिफाइज लर्निंग डेफिशिएंसीज ऑफ द लर्नर्स? समेटिव, डायग्नोस्टिक, कंटीन्यूअस, आउटोजी, प्लेसमेंट। तो नियार सठिक आसीबो कोन जे डायग्नोस्टिक। नेक्स्ट, listening and speaking are known as primitive skill, modern skills, primary skills, advanced skills। ताला कोड आसीबो जे ये होजी प्राइमरी स्किल्स बोली को आजिबो listening और speaking। Apart from the four basic language skills, what are the other skills of language? Learning and memorizing, creativity and imagination, grammar and principles, thinking and reasoning। ताला कोड आसीबोडा थिंकिंग एंड रीजनिंग ये होजी अदर स्किल ऑफ लैंग्वेज। वी डैश न्यू दिल्ली बाय दिस टाइम टुमारो, फिल इन द ब्लैंक्स। विल रीच, विल बी रीचिंग, विल हैव रीच्ड, वुड हैव रीच्ड। ताला कोड आसीबो जेडी हो वी विल हैव रीच्ड इन न्यू दिल्ली बाय दिस टाइम टुमारो। तनो सी हो हमर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, the post modifier in the noun phrase of the following sentence is the man next door is a very fine gentleman। next door, the, very, fine। ताला कोड आसीबो ट्रू the next doors। ठीक अछि। the man next door is a very fine gentleman।
ताले एटा होची हमरो पोस्ट मॉडिफायर। नेक्स्ट 69 in the system of language teaching and learning the system of constructing word is called teaching and learning the system of constructing word is called semantics, morphology, syntax, phonetics। ताले टू ठीकटा होची morphology। In the context of English, speaking skill is the ability to speak English intelligibly, confidently, courageously with an English accent। तेणु एटू सठिक उत्तर आम रहिबो कोन इंटेलिजिबली। ठीक अछि। नेक्स्ट रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तेणु आम पैसेज टाको पढ़िबा एवं 71 टू 75 पर्यंत क्वेश्चन रा आंसर देबा। ओवर द ईयर excavation of Pompeii and Herculaneum have revealed a great deal about the behavior of the volcano Vesuvius, eruption of which wreaked havoc on these cities in 79 AD. By analyzing data, scientists have conducted that the eruption changed large portions of the area's geography. It turns the Samo River from its course and raised the level of the beach along the Bay of Naples. Meteorologists studying these events have also concluded that Vesuvius caused a huge tidal wave that affected the world's climate. In addition to this, archaeologists have studied the skeletons of the victims and have drawn conclusion about the diet and lifestyle of the residents। तो ये थिला हमर पैराग्राफ एवं ताकु ने नामे 71 टू 75 पर्यंत तार आंसर को हम देखिबा। तो नंबर 71 द इम्पैक्ट ऑफ द वोल्केनिक एरप्शन वाज लोकल, ग्लोबल, रीजनल, बोथ लोकल एंड ग्लोबल। तो ये हम हमर सटीक आंसर बोथ लोकल एंड ग्लोबल। Which of the following statement is not related to the passage? तार कोड आमर रिलेटेड नुही। The volcanic eruption elevated a sea beach. It completely destroyed Pompeii and Herculaneum. It changed the course of a river. It affected the global climate. तो यार कोड़ा हबो is not related B। Next 73 Pompeii and Herculaneum are their cities Greek, French, Italian, Spanish। ताले ये हबो कोड़ा जी ये होजी Italian cities। Next the expression wreaked havoc as used in the passage means caused changes, caused great destruction, caused untold misery, caused a destructive tidal wave। ताले यार सठिक रहबो caused great destruction। Next, which of the following was not a direct consequence of the volcanic eruption? It caused the death of the residents. It changed the course of river Samo. It had impact on the world's climate. It raised the level of the sea beach along the Bay of Naples। ताले यार सठिकटा रहबो कोडा नै सी रहबो it had impact on the world's climate। Next, which one of the following sentence is correctly punctuated? To be frank, we don't care for our nation, do we? To be frank, एटा कमा रहला जे we don't care for our nation, do we? To be frank, we don't care for our nation, एटा देखो exclamatory रहला तब do we? To be frank, we don't care for our nation, do we? ताले यार करेक्ट हमर कोडा रहइबो जे रहइबो एटा to be frank कमा रहइबो we don't care for our nation कमा do we तापरे question mark। Next, when I met Manav, he dash for 10 years, hela he dash for 10 years। Married, was married, had been married,
would have been married তাহলে এটা কোডা বসিব যেটি had been married when I met Manav he had been married for 10 years the young man was wearing a dash 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 jacket ঠিক আছে তাহলে কোডা হবে the young man was wearing a black leather tight jacket না tight leather black jacket না black tight leather jacket না tight black leather jacket তাহলে কোডা হবে ট্রু ডিটা হবে the young man was wearing a tight black leather jacket ঠিক আছে নেক্সট 79 according to dash US embassy official dash USA wants peace in dash Middle East তাহলে এটা কোডা হবে যে according to a US embassy official the USA wants peace in the Middle East তাহলে কোডা হবে এ দি কোডা আসিব এ আসিব অপশন তাহলে এ হচ্ছে আমরা সঠিক উত্তর next which of the following is an important stage in the writing process memorization editing calligraphy comprehension তাহলে কোডা হবে ট্রু এডিটিং হবে নাকি ইম্পর্টেন্ট স্টেজ ইন the writing process la editing what is the functional objective of teaching poetry functional objective of teaching poetry to utilize new technique of teaching to entertain the students to give students a chance to express their emotion and enjoy them to break the monotony of routine bound life তাহলে কোড আসিব ট্রু সিড আসিব to give students a chance to express their emotion and enjoy them which of the following statement is not true development is a qualitative process growth is a biological process education is a goal oriented process learning is a process of a behavioral changes তাহলে ই আসিব কোডা যে আমার আসিব এডুকেশন ইজ এ গোল ওরিয়েন্টেড প্রসেস দিস স্টেটমেন্ট ইজ নট ট্রু as human grow older the dash of learning declines the most appropriate word to be used in the blank is power quantity speed quality তাহলে এই ড্যাশ রে আমার কোনটা কোডা লাগিব as human grow older the speed of learning declines তাহলে আমরা অপশন সি রইব next we dash living in Puri dash 25 years now then the best pair of to be used respectively in the blanks is are for are since have been for তাহলে কোন হবে যেটি আমরা we have been living ঠিক আছে we have been living in Puri for 25 years now have been for কোড আছে ডি রেজি তো ডি হবে আমরা সঠিক উত্তর নেক্সট the common order of arrangement of adverbs of time place manner is ताको हमें arrangement करिबा common order रे जे कोडा आगर रहबो time ना place ना manner कोडा आगर देखिबो आकु देखिबा जे प्रथमे रहइबो manners तापर रहइबो place तापर रहइबो time जोडा कि ऑप्शन सी रे अछि next read the following passage and indicate the option that offer the most appropriate answers to the questions that follows 86 to 90 पर्यंत गोटे पैसेज अछि आमे पढना प्रथमे many years ago when the art of stunting plants was quite unheard of except in remote areas of India Buddhist monk is isolated monasteries in Tibet stunted trees like the oak orange tree peepal tree watching with excitement the tree still flowering and bearing fruit regardless of this deformity. Subsequently, the art was learned by some Chinese monk who taught bonsai making, an art which became most sought after in China. While China and India claimed right to the art and its practice, Japan soon followed, enamored by its beauty. Today, Japan leads in bonsai making of plants and has derived new methodologies to make the plants look artistic. The bonsai remain full grown for even more than 10 years although it needs constant
pruning, watering, shaping and conducive environments. তাহলে এটি কোশ্চেন হলো আমরা the earliest practitioners of the art of stunting plants belonged to dash India and Tibet, China and Japan, India, China, Japan. তাহলে কোডাটি হবো এটা হবো ইন্ডিয়া এন্ড তিব্বত। নেক্সট 87 in the passage of expression unheard of the sought after are noun phrases, adjective phrases, adverb phrases না phrasal verb। তাহলে ইয়ে হচ্ছে কোন যে এগুলা হবো সব adjective phrases হবটা, ঠিক আছে। Stunting plants means making plants grow luxuriantly, arresting the growth of plants, cutting them down, pruning them down। তাহলে এটা কোডা হবো ইয়ে হবো arresting the growth of plants। Which of the following statements do not follow from the passage? The art of stunting plants is much in demand in China. Bonsai plants remain full grown for over a decade. Buddhist monk borrowed the art of stunting plants from India. So, ये है वो C है हमारा correct answer. Then in the passage the word enamored means dash amazed, surprised, amused, fascinated। তাহলে কোড়া হবো ইয়ে হবো fascinated, ঠিক আছে। তাহলে আমার ইংলিশরে এইভাবে আমার 30টি প্রশ্ন মধ্যে আমার আসিব। তেমন তা পূর্বর নিজকে সে অনুসারে প্রস্তুত করে নিও। ভিডিও যদি ভালো লাগলে তাকে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে এবং চ্যানেল নয়া সবস্ক্রাইব করে নিও। তা নোটিফিকেশন বেলକୁ ମଧ୍ୟ অন করে নিও। ঠিক আছে, আজ আলোচনাକୁ ରଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ, ବାଏ ବାଏ।